and it has got some other journey. We are in another dimension, and so when this film came about, I was sent a text message by one of our common friends, Sanjay's and mine, that this film is about this subject, which is death and life, and will be directed by a 24-year-old whose first film got the best short film in Venice Festival in 2013, called Kush. And would you be interested? I said, yes, I am in. So, and then I read the script. And after reading the script, I was even more convinced, the English version of it, and then I read the Hindi script, so I was more convinced after that. And I was enjoying the shoot the way that I would enjoy my NSD days theatre production, because of the kind of the kind of affection that we feel in a theatre group, which I miss in films most of the time. That films, the actor comes, they go into their vanity van and they sit there, and before the shot they would come and just we do the scenes, and then we don't know each other and we go on our own ways. But this film was sort of that affection between all the actors and the producers and the crew and the cast. And the crew average age was 24, 25. And the cast averages was what? You counted it the other day. I think it was about 65. 65 or 70. So I was like, okay, buzurg ban gaye to hum. Anyways, so it had been a great experience, and thank you, Subhashish, for reaching out to me. And I feel gifted. I feel extremely blessed and grateful to be part of this film. It has made me realize more things about death when I was walking in the pyres when it was burning. So I came to sort of realize that, oh, there where I have to go one day, or maybe today. And so, thank you so much. Just adding to this, the film had its world premiere at Venice Film Festival to a standing ovation, and it won the UNESCO Enrico Fulcignoni Award, and also received the UNESCO Gandhi Medal in February this year in Paris. And it won the Critics' Choice Award in French premiere that was done at Vesoul. And it has had its Asia premiere at Busan and Dubai, the Middle East premiere, and it's been traveling all over the world in all the premium festivals. Now we've done about 8-9 festivals in Europe and Southeast Asia, and now it's scheduled to go to North America and Australia and Taiwan and Toronto and UK and many other countries. I think about 25 odd we've already confirmed. And the good thing is that we are being invited for festivals, most 99, no, we have not actually applied. In all the cases, the festivals have invited Mukti Bhavan everywhere. So we've not applied at a single festival. So that's the testimony of this very beautiful film that Subhashish and all of us, of course, supported him, and this team has made such a great. We all love it. So, to ask questions. So, release के क्या plans हैं, किस तरीके से release करने वाले हैं, क्या theaters से होगा, कोई भी बता सकता है? So we are releasing it on 7th April, as you saw in the promo. So it's releasing in top 20 cities to start with, in about between 80 to 100 cinemas, and primarily focusing on multiplexes, because we believe that that's where the primary audience is. However, we are releasing in places like Lucknow, Varanasi, Kanpur, Chandigarh, Guwahati, Kolkata, Nagpur, Indore, Jaipur, Jodhpur. So we are looking at, we're releasing in these towns, apart from Bombay, Delhi, Bangalore, Calcutta. So it's going to big metros as well as mini metros and some of the smaller towns. So that's what it is. And so promotions are happening right now, and it's an independent film. So whatever best we can do through social media, through little bit in television, press, and other activities that we can do. And we've been on the road since 4 days. We were in Calcutta 3-4 days ago. We went to Banaras. Now next stop is Bombay, and then now we go to Delhi after this. क्या मानक होते हैं आपके किसी भी किरदार को या फिल्म को शूट करने के? दो चीज़ें होती हैं. एक तो मैं देखता हूँ कि बैंक में कितने पैसे हैं, तब मैं एक कमर्शियल फिल्म कर लेता हूँ, और उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि एक ऐसा किरदार आया है जिसमें मुझे
मेरी रात की नींद छूट जाती है, या देखता हूँ कि जहाँ जिस किस्म के स्थिति को, अपने अंदरूनी स्थिति को मैंने अभी तक निभाया नहीं है या महसूस नहीं किया है, उस किस्म की स्थिति या स्टेट ऑफ फीलिंग इमोशंस को अगर कोई डायरेक्टर सूक्ष्मता के साथ या सटलिटी के साथ लिखे हैं, तो वहाँ जाके मुझे सबसे चैलेंजिंग लगता है कि जब मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये किरदार मैं कैसे करूँगा, तभी तो मज़ा आता है। तो इस फिल्म में हमेशा इट वाज लाइक आई एम ऑन माय टोज, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई हैड ग्रेट को एक्टर्स एंड अ विजिलेंट, wise, intelligent, humble director to guide me through, and I hope it worked. It worked for us, and I don't know whether it will work for the audience or not. I believe that it will work for the audience very much. किस विधा को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, like theater, commercial या real? Theater, any day. I have no qualms about it to say, because I think that theater is a place where an actor grows all the time. Films are, because of the nature of the medium, it is shot haphazardly. It is shot, first scene is shot on the last day. Like I just did a film in Dhaka. The first shot was the last scene, and the last shot was the first shot was the first shot. No, the first scene was shot on the last day, and the last scene was shot on the first day. So it is very difficult to, experience the journey, and I'm a sucker for my emotional experience, and that's why I have become actor, or that's why I started acting. So मेरे ख्याल से फिल्मों में जितने exploitation और exploration एक एक्टर के होते हैं, और जिस किस्म के थिएटर में करते आया हूँ पिछले कितने सालों से, वहाँ का 10% भी फिल्मों में इस्तेमाल नहीं होता है, या वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म के फिल्मों में मुझे काम करने का अभी तक मौका मिला है, which includes this one, I think I would consider this is the finest piece of the script I got, and I hope that I did justice to it. तो मैं lucky हूँ कि I'm also doing Robo 2 and Force 2 and Commando 2, and I'm also doing this because both are very important in so many different ways. One to pay the bill, the other is for dil. So I find it, it's very important to balance that out. How did the idea come about? Actually, the idea came because I travel a lot. So I had gone to Banaras, and there someone told me about these hotels where people have 15 days to die or they have to go back home. So it made me laugh at first, but it also puts you in a state where I was really confused. And I went to these hotels, read about them, and started meeting the people, just because I couldn't believe that something like this exists in our own country, And I heard a story there about a son who had to bring his father here, and it really, I really choose my script, what I want to write. If for 2-3 months or sometimes 4 years, my short film, it took me 4 years before when I thought about it and made it. If the idea cannot let go of me in a way. And so 3 months later or 4 months later, I started to write this a story about a son who has to bring his father to this place. ललित जी, आप ये बताएं कि फिल्म करने के दौरान, जैसे आदिल सामने बताया कि मृत्यु के प्रति उनकी क्या सोच समझ आई, आपको क्या लगा कि मौत क्या है, मौत के लिए मौत के प्रति आपकी क्या सोच? ये फिल्म वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और जहाँ तक फिल्म से इम्प्रेशन में बदलने की बात है, सच बात ये है कि ये फिल्म करने के बाद मैंने अपने आप को फिर से दोबारा टटोला देखा, और सचमुच में फिल्म मुझे एजुकेट करके गई है और सचमुच में बदला भी हूँ। और जहाँ तक मौत की आप बात कर रहे हैं, तो मौत के बारे में ये है कि ये करने के बाद थोड़ा लिबरेट हुए। मतलब मौत से जो थोड़ा बहुत खौफ पहले होता है, वो शायद कहीं उड़न फुड़ हो गया। समझ में आ गया कि ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है।
खूबसूरत बात है, ये फिल्म मौत से कहीं आगे भी जाती है। ये हमें पुनर्जन्म तक भी लेके गई और इसकी परतें इतने खूबसूरत हैं। जब वो खुलनी शुरू हुई, जब मैंने सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ी तो बड़ी इम्प्रेसिव थी फर्स्ट रीडिंग में। उसके बाद रीडिंग के बाद सुबह से मेरी मुलाकात होती है तो ऑफ कोर्स ये एज में काफ़ी छोटे थे, तो पहले तो मैं स्क्रिप्ट से बहुत इम्प्रेस हुआ। फिर जब इनसे बातचीत की तो मुझे लगा ये तो बड़ी बात होने वाली है और घुस जाओ इसमें। मैंने फौरन इसको बोला यस आई एम गोइंग। ये मेरी सेकंड फिल्म है। जैसे पहले मैंने तितली में एक कैरेक्टर किया था, वो भी फादर का था, लेकिन उस फादर में और इस फादर में बहुत अंतर था, बहुत काफ़ी फर्क था। वो एक छोटे से डेन और क्राइम के फैमिली को हेड कर रहा है और साइलेंटली उसको ऑपरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ जो फादर था बड़ा सेंसिटिव है और बाहर से उसका शेल बड़ा सख्त और ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन अंदर में बहुत लहर है, पोइट है, मतलब उससे काफ़ी मुख्तलिफ था। मेरे लिए बतौर एक्टर इसमें काम करना एक एजुकेशन का प्रोसेस भी था। तो मुझे बहुत अच्छा डायरेक्टर मिला था और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली थी और सोने में सुहागा ये हो गया जब मुझे मालूम पड़ा कि आदिल बेटे का रोल करने वाला है। तो आदिल के साथ काम करना अपने आप में एक और दोबारा से स्कूल में जाने वाली बात हो जाती है। तो हालांकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधित हैं, ये NSD से, मैं भी NSD में कुछ देर रहा हूँ और वहाँ एक कल्चर है बहुत बड़ा। तो मेरे लिए फिल्म मौत और उससे भी कहीं आगे कुछ और एजुकेट करके गई है।